Would say it is to execute your thought process meticulously on the roads. For example, let's say anticipating the behavior of the environment. What is environment? Again, in my last videos, मैं बहुत बारी ये बताया था environment is nothing but variables and constants. Constants are not under your control. Constants are constants, but variables are not under your control. You need to control the variables. There are limited aspects of variable which you can control. So इसके बारे में हम बात किए थे. और you could say preventive braking, जो काफ़ी strong एक पार्ट है डिफेंसिव ड्राइविंग का, और कॉर्नरिंग विथ अ ग्रेटर स्टेबिलिटी, ये सारे आपके स्किल्स है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स. इट कुड बी योर यूनिक स्किल. Strengths are nothing but your particularly your unique skills, or we say it as personally tested capacity based outcome exercise, PTCOE, personally tested capacity based outcome exercise, that you acquired with time. For example, let's say maintaining a good average speed with utmost safety could be a strength, or generating a good fuel economy could be a strength. Thus, strength embodies skills. Strength के अंदर ही skills है. Strength जो है वो आपका particular एक जो capacity building exercise है, over a period of time जो results, जो feedbacks आप generate किए हो और उस पर आप जो expertise किए हो, वो आपका स्ट्रेंथ है. और उस स्ट्रेंथ को एक्सपर्टीज़ करने के लिए जो टूल्स आप यूज़ किए हो, जो पैराफर्नेलियास आप यूज़ किए हो, वो आपका स्किल्स है. सो दिस यूनिक स्ट्रेंथ कुड बी, वी कॉल इट एज पर्सनली टेस्टेड कैपेसिटी बेस्ड आउटकम एक्सरसाइज. पर्सनली टेस्टेड इसलिए है क्योंकि सबका स्ट्रेंथ डिफर करेगा और आपका स्ट्रेंथ सबसे डिफर करेगा. सो these are your strengths, that's why it is personal. आपने खुद टेस्ट किया है इसको, that's why it is personally tested. कैपेसिटी बेस्ड आउटकम, जो कैपेसिटी बिल्डिंग आप किए थे, जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज आप किए थे, उसका जो आउटकम है, उसका जो फीडबैक सिस्टम है, उस फीडबैक सिस्टम को आप कैसे फिर से रेनफोर्स कर रहे हो इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर कैपेसिटी बिल्डिंग. दिस इज ओनली स्ट्रेंथ. नाउ जैसे आपको स्ट्रेंथ पता चला, लाइक यू कुड से ऑल द स्ट्रेंथ्स आर स्किल्स बट ऑल स्किल्स आर नॉट योर स्ट्रेंथ. आप समझ पा रहे हो ये बात? क्योंकि जितने भी स्किल्स है, ऑल द स्ट्रेंथ्स आर स्किल्स. आपका जो पर्सनली डेवलप्ड स्ट्रेंथ है, विच इज़ द PTCOE, पर्सनली टेस्टेड कैपेसिटी बेस्ड आउटकम एक्सरसाइज, ये जो आपका स्ट्रेंथ है, दिस आर नथिंग बट एक्ट of skills, or you could say cluster of skills. but कुछ skills ऐसे होते हैं जो आपके strength में convert नहीं होते हैं. you could say कुछ skills ऐसे होंगे जैसे drifting. it's your skill but you are not doing it regularly. आप हर बार उसको टेस्ट नहीं किए हो. you are not going to drift on a corner. let's say in a Himalayan pass आप ड्रिफ्ट करने नहीं जा रहे हो. so these are skills that you have but these are not your strength. आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कहीं पे एक कार चेज हो रहा है, यू आर रनिंग फॉर योर लाइफ. दैट डजंट मीन दैट उस टाइम पे आप अगर ड्रिफ्ट करते हो और आप परफेक्टली एग्जीक्यूट करके चले जाते हो. देर आर चांसेस यू कैन डू इट बट देर आर चांसेस दैट यू मे फेल. और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाता है स्किल्स और स्ट्रेंथ. अगर वो आपका स्ट्रेंथ था तो वहाँ पे फेलियर का चांसेस कम होगा एज कम्पेयर टू स्किल्स. स्किल्स अगर आपका यहाँ पे है तो वो फेलियर का चांसेस ज़्यादा हो सकता है. यू कुड से स्किल्स डन 100 times or 1,000 times turns into strengths. If you are a professional, you say professional drifter, then probably you could have done that what do you say, dead corner drift, and possibly आप वहाँ पे जिंदा भी बच जाओ. तो वहाँ पे आपको हम बता सकते हैं कि ये आपका स्ट्रेंथ था. बट जहाँ पे आप ओकेजनली करते हो वो आपका स्किल है. इट विल नॉट गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर स्ट्रेंथ.
सो ये होता है डिफरेंस स्किल और स्ट्रेंथ. इसको आप और एक वे में समझ सकते हो, जैसे योर स्ट्रेंथ हेल्प यू टू अचीव ए डिजायर्ड आउटकम, राइट. द गोल्स, आउटकम्स आर द गोल्स जो हम अचीव करना चाहते हैं. नाउ यूटिलाइजिंग ऑल द स्किल्स यू पोजेस, वी ट्राई टू अचीव दैट आउटकम. नाउ जैसे ही हम अभी गोल्स के बारे में बात किए, we can say goals are of two kinds, that is means goal and end goals. Means goals are actionable goals which are concrete, measurable, which you can take to progress towards your end goals. For example, mastering defensive driving is your end goal. वो आपका ultimate goal है, it's the final goal. Then learning, being patient on the roads, disciplined driving, lane discipline, all these factors are your main goals. और जैसे मेन गोल्स और एंड गोल्स में क्या डिफरेंस होता है, जैसे आपको पता चला एंड गोल इज योर अल्टीमेट गोल एंड मेन गोल्स इज द स्मॉलर गोल्स टू अचीव द फाइनल गोल. जैसे अगर आपको डिसिप्लिन ड्राइविंग सीखना है, अगर आपको मास्टरिंग करना है डिफेंसिव ड्राइविंग में, यू नीड टू अंडरस्टैंड डिसिप्लिन ड्राइविंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेन डिसिप्लिन. अगर आप लेन डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट अचीव मास्टरिंग द डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स. सो ये होता है मेन गोल एंड एंड गोल. तो एंड गोल्स जैसे एस्पिरेशनल गोल्स होते हैं, जो अल्टीमेट गोल्स होते हैं, विच रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज पिक्चर. दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से it is the ultimate desired state or the epitome you want to reach, like mastering defensive driving जैसे मैंने अभी बताया, या फिर making Indian roads a safe paradise for all. These are ultimate goals. These are very big goals which cannot be achieved in a single day, but eventually by working on your main goals you can achieve the end goals. I hope you can understand कि जैसे एक बड़ा सा गोल है, उसको अचीव करने के लिए यू नीड टू ब्रेक दैट गोल इनटू स्मॉलर सेक्शंस. यू वांट टू बी अ परफेक्ट ड्राइवर. अभी हम डिसीजन मेकिंग में कहा कि परफेक्ट नहीं होता है. वी ट्राई टू बी अ सेटिस्फाइसिंग ड्राइवर. नो वन कैन बी परफेक्ट. नाउ सेटिस्फाइसिंग ड्राइवर में आपको लाइक थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग करना होगा हर बार, और कहीं पे आपका डिसीजन सही हो सकता है, कहीं पे आपका डिसीजन गलत हो सकता है. आप ये सारी चीज़ों को लिंक करें, देन यू कैन फॉर्मुलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू. तो वो जो छोटे छोटे आपके जो सेक्शंस है, दीज आर योर स्मॉल मेन गोल्स. जैसे लेन डिसिप्लिन, एवरेज डिसिप्लिन ड्राइविंग, एवरेज स्पीड, प्रोफिशिएंसी, ये सारे डिफेंसिव ड्राइविंग का छोटा छोटा पार्ट है. वंस यू मास्टर दिस स्मॉल गोल्स, अल्टीमेटली यू विल अचीव द बिगर गोल, which is mastering the art of defensive driving. This is how you could objectify your learning curve to attain capacity building and eventually mastering the art of defensive driving. Now, as we have discussed skills, strength, now comes resources. Resources are nothing but these are the tools, these are the paraphernalias, these are the equipments that you carry in case of an unprecedented situation arise. These tools could be as simple as a jumper cable and as complex as a recovery utility kit. Even the people you carry in the vehicle are your resources, because accidents do not discriminate between passengers and drivers. आपको पता नहीं, ये बेसिक सा टूल, जस्ट लाइक you can say a screwdriver or a more complex one like electric battery charger, or instead of the jumper cable you can use a battery power bank that starts a heavy vehicle with a very small short package. ये सारी चीज़ आपके टूल्स हो सकते हैं, and in cases of contingencies this will be of very 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 great use, and you will appreciate all these tools in the time of your need. अगर I believe all the message that I want to convey is being delivered up to a standard. आपको समझ आ रहा होगा. In case you cannot correlate with it, in case there is a gap between our conversation, then do let me know in the
comments below, so that I would be able to understand at what level I should try. I should whether I'm like delving very much deeper into the concepts, or I'm just flying superficially just above the concepts. So let me know in the comments so that I could tune myself according to your understanding levels.